हाय गाइस, वेलकम बैक। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स का Q3 के अपडेट के बारे में। राइट, इफ यू लुक एट द एंटायर ज्वेलरी स्पेस, यहाँ पे बहुत सारे टेलविंड हो रहे हैं। पहले तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंटायर हॉलमार्किंग रूल दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। नॉट ओनली दैट, अगर आप अभी द न्यू रूल दैट इज देयर कि लाइक अगर आपने 2 लाख से ज्यादा गोल्ड खरीदा तो यू हैव टू लिंक योर प्रोवाइड योर पैन और आधार, राइट? So because of all of these things, there has been immense shift from unorganized to organized space. So इसके वजह से तो of course organized players such as कल्याण, सेनको, टाइटन जो है उनका तो बहुत फायदा होने ही वाला है, ठीक है। So कल्याण का अगर आप बात करते हैं, द मेजर चेंज इन कल्याण अगर आप लास्ट 1 ईयर से ट्रैक करते आ रहे हो तो यू विल सी दैट कि लाइक पहले कल्याण जो था साउथ इंडिया में ज्यादा था, राइट? दे वर ऑपरेटिंग ओनली इन साउथ इंडिया। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया कि लाइक उनको पैन इंडिया प्रेजेंस चाहिए, सो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स, they started opening a lot of stores in the north of India. Not only that, कि like पहले अगर आप कल्याण का स्टोर्स देखते थे वो सिर्फ कोको स्टोर्स था, दैट इज कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। और वहां से उन्होंने मॉडल चेंज किया कि लाइक हम लोग अभी फ्रेंचाइज को भी करेंगे, दैट इज फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स भी किया। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स अलॉन्ग विद प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता रहा, राइट? द स्टार्टेड रेशियो जो था उनका, स्टार्टेड का मतलब क्या है? प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो आपको मालूम है। स्टार्टेड का मतलब वो you get all this white stone and different kinds of stone you embedded into the jewelry, right? इसके वजह से क्या होता है? वैल्यू ज्यादा होता है। So either ways, because of all these three reasons, one is shifting, getting a pan India presence, going from coco to foco, and the studded ratio अभी I think as of Q2 जो था studded ratio था 25%. So all of these things really helped Kalyan grow the top line, ठीक है। एंड अगर आप हम Q3 के अपडेट के बारे में बात करते हैं, इट इज नॉट अ शॉकर इफ यू लुक एट अ कंसोलिडेटेड बेसिस में, क्योंकि कल्याण का स्टोर्स इंडिया में भी है एंड मिडिल ईस्ट में भी है, ठीक है। सो कंसोलिडेटेड में बेसिस में अगर आप देखते हो, कल्याण हैज ग्रोन बाय 33%, उनका टॉप लाइन ग्रो हुआ है 33%। बट इट इज नॉट अ शॉकर, क्योंकि अगर आपने Q2 FY24 का कॉन कॉल पढ़ा था, राइट? उस यूजुअली Q2 का कॉन कॉल होते कब? नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज Q3 पीरियड, राइट? उन्होंने बोला था कि लाइक the first 45 days of Q3 जो था, if you compare FY20 this year का Q3 with last year का Q3, for those 45 days there has been a growth of 35% compared to last year, ठीक है। this was specified by the management in Q2 only, so right, that is why I'm telling you उनका Q3 का अगर आप टॉप लाइन देखते हो, it is not a shocker 33%, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला था। अगर आप इंडिया का जो स्टोर्स, इंडिया का ऑपरेशन है कल्याण का, that has seen a growth of 40%। और मिडिल ईस्टर्न का स्टोर्स जो है which is contributing 13% to the overall revenue, that has grown by 6%। and the management could have done more, but I'm not complaining, 33% is still a great a great show। but the management का कहना है कि like there was a lot of gold price का volatility था। और तमिलनाडु में आई थिंक वी ऑल हैव सीन, राइट? हमने ट्विटर में इतना सारे वीडियोस भी देखा होगा कि लाइक तमिलनाडु में फ्लड था, इसके वजह से एक हफ्ते का पूरा सेल्स चला गया था। सो देयर वाज नो सेल फॉर 1 वीक, इट वाज कंप्लीटली अफेक्टेड। And because of all of these reasons, a little bit, these were the headwinds faced by the sector, and especially Kalyan. So अगर आप देखते हो, the other thing is, in update में दिया गया था कि स्टोर एक्सपेंशन रेट कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर आप पहले देखते थे कि कल्याण का FY23 का एंड में 120 स्टोर्स था, ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड दे टोल्ड कि इस साल में हम लोग 65 स्टोर्स ओपन करेंगे, और अगले साल में, दैट इज FY25 में हम लोग ओपन करेंगे 80 स्टोर्स, ठीक है। Right now, if you see in this quarter also, they have opened great with the store expansion, 22 stores open किया है। उस 22 stores में 16 stores है franchise का, ठीक है। And अगर आपने like I told earlier, they had mentioned in one of their con calls, the start of the year, they had mentioned कि like going forward, probably in the next 3 to 4 years, अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप देखते हो 20% ही आ रहे हैं टोटल स्टोर में, 20% है franchise का और 80% अभी भी है कोको का, ठीक है। So going forward, they told in next 3 to 4 years, हम जो stores है 50% franchise होगा और 50% कोको स्टोर्स होगा उनका। सो द फैक्ट दैट इवन दिस क्वार्टर अगर आप स्टोर एक्सपेंशन में आउट ऑफ 22 16 इज फ्रेंचाइज, इट इज अ गुड शो, राइट? कि लाइक द कंपनी इज डूइंग एग्जैक्टली एज दे वॉकिंग द टॉक विद व्हाट दे एग्जैक्टली टोल्ड, ठीक है। सो इवन देयर आल्सो नो प्रॉब्लम। एंड गोइंग राइट नाउ एज ऑफ December, like December 31st का अगर आप देखते हो, दे हैव ओपनड अराउंड 235 स्टोर्स टोटली, ठीक है। सो स्टोर एक्सपेंशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंस द फैक्ट they are growing the stores at this fast rate also, you can see that the top line is also growing like this, ठीक है। because if you look at, अगर आप सेनको का, मैं Q2 का बात कर रही हूँ, Q2 में कल्याण grew 27%, सेनको grew somewhere I think between 23 to 25% in that range, and Titan grew by 18%। you saw that
Kalyan grew the fastest. I mean, the pace of growth, अगर आप देखते हो, Kalyan का ज़्यादा था compared to Titan and Senco. One of the reason is this, because they're opening stores very aggressively. Like, and they also have a plan to like double the store count in the next 2 years. And that is the reason you're also seeing कि like 30%, 35% का growth rate आपको मिल रहा है. So going forward, by this financial year, that is by Q4, जब ये होगा, the company wants to open around 250 stores. That is what they're planning. And जो ongoing quarter है, because Q3 तो हो गया है and Q3 का result आने वाले Jan में, but ongoing quarter मतलब Q4 में they have told that कि like उनका 250th showroom जो है, that will be opened in Ayodhya. I think everybody knows, right, कि like अभी तो अयोध्या में ज़्यादा boom हो रहा है because of the construction of that Ram Mandir जो है, right? And that is where company is really proud about the fact that they are going to do open that the 250th showroom of in this year, in this financial year, by at Ayodhya. Not only that, like going forward, they unka they want to open like 15 showrooms. I mean, मैं बोल रही हूँ कि like next quarter में at least they want to open 15 Kalyan का showroom, and 13 वो 15 Kalyan का showroom in India, 2 showroom in Middle East, and 13 showroom जो है उनका Candor, the brand that they have, right? So this is what it is. But overall, great update. कोई भी complaint नहीं है. We have to wait and watch for Senco का update and sorry, Titan का update. We have to see the trend continues. Will Senco beat Kalyan in terms of pace of growth or not? And how the product mix has changed even for Senco. I think this is something we have to watch. But right now, as of now, if you look, Kalyan still continues to like beat everybody in the jewelry space. Other than that, ये तो सिर्फ update था, तो क्योंकि update में आपको सिर्फ top line का growth मिलता है और store count में क्या हुआ है वो मिलता है. Going forward, we have to also wait and see Q3 में कि like जो operating leverage है, is it still there? What we saw in the last quarter, ROE का direction कैसा चल रहा है, and डेप्थ जो था वो कैसा नीचे आ रहा है कि नहीं. So all of these things. But as of now, कि like right now, just by looking at the update, there is nothing to complain. हाँ, और एक और बात था SSG का. अगर आप same store sales growth देखते हो, the company has told कि like it is the same as that of last quarter. So last quarter में Indian stores जो था उनका SSG था somewhere between 8 to 10%. That was the range. And Middle East में जो भी stores था उनका SSG था around 15%. So I believe that has been the if the company has told same as Q2, that must be the numbers for it. Overall, great. अगर आप देखते हो, great revenue भी ठीक है, store expansion भी ठीक है, nothing to complain. Demand is also continuing to be strong. I think this is something I highlighted in all of my consumption videos, right? कि like Q3 का अगर आप देखते हो कोई भी consumption space with अगर आप Q2 से compare करते हो, anything and everything will do well. क्योंकि Q3 में अभी तो सारा के सारा festival था, whether you talk about Dasara, Diwali, and all of the festivals that you can imagine was in Q3 instead of Q2. So overall, great update. Let us just wait for the result to paint complete analysis and see how Kalyan has done. So that's that for today, and take care. Bye bye.